ओके सो हाय गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। Audio Jungle. तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले अपने इस मॉडल का बैकग्राउंड यहाँ पे इरेज कर लेंगे। एंड इसको इरेज करने के लिए हम यहाँ से चले जाएंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे एंड अपनी मॉडल को जो ऊपर ले जाएंगे एंड लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड जाएंगे रेजर टूल में एंड जो ब्रश का साइज है गाइस अपने हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम फटाफट से इस फोटो को जूम करेंगे एंड यहाँ पे हम इरेज कर लेंगे। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 माइनस पर कर देंगे एंड शेडो को बढ़ा देंगे। वाइट को जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड जो ब्लैक है गाइस इसको हम हल्का सा कम कर देंगे, ठीक है।
ब्लैक को हल्का सा कम एंड जाएंगे ऐसे कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को हल्का सा माइनस करेंगे यहाँ पे हम, और जाएंगे यहाँ से हम कलर्स मिक्स में एंड यहाँ से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे एंड जाएंगे यहाँ से येलो कलर में इसका ह्यू माइनस कर देंगे एंड सैचुरेशन प्लस कर देंगे एंड जाएंगे ऐसे गाइस ग्रीन कलर में इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद जाएंगे यहाँ से डार्क ब्लू में एंड इसका सैचुरेशन भी यहाँ पे माइनस कर देंगे हम एंड इसके बाद ये पर्पल कलर है, ठीक है, तो इसका भी हमें सैचुरेशन माइनस कर देना है एंड यहाँ पे कर देंगे डन। एंड इसके बाद जाएंगे गाइस हम कलर के नीचे वाले टूल में एंड यहाँ से फोटो की जो क्लियरिटी है आप सभी को इसको बढ़ा देना है एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट है वो डाल देना है एंड इसका फोटो को नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप सभी को ये मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रेन अमाउंट इसको बढ़ा देना एंड इसका जो नीचे वाले टूल में था फोटो की शार्पनेस को इंक्रीज करना